Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Knowledge Hub. Dear students, how are you? Various questions are arising regarding the spoken English language. Sometimes people think that when we have to speak English, we must use very difficult words, we must use very extraordinary, jaw breaking words and phrases and idiomatic expressions in order to express ourselves. Actually, it is not the case. The real situation lies quite on the contrary side. When we speak in normal language, when we speak in normal life situation, we can use very simple words, just simple vocabulary. We don't need to become so high-fi while talking to other people. Because when we talk in Punjabi, when we talk in Urdu, when we talk in any other local language, which is our mother tongue or our regional language, we never bother ourselves to use idiomatic expressions, to use most extraordinary words, to use difficult words. For example, in Urdu, we never say that ये काम करते हुए मैं कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं करूँगा। कभी आपने उर्दू में सुना हो कि कोई आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कोई इतना मुश्किल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करे। अक्सर लोग कहेंगे जी तनख्वाहों में कम इजाफा हुआ। कभी आपने सुना हो कि आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कोई शख्स कह रहा है कि हमारे माहाना मशाहिरे में बक़द्रे अश्क बुलबुल इजाफा हुआ है। कभी इतने टफ और अनयूजुअल जो वर्ड्स और फ्रेजेस और ईडियम्स हैं उन्हें आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। आम गुफ्तगू में हम देखते हैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, आम सिंपल वर्ड्स। मुझे बल्कि बड़ी एक दिलचस्प बात याद आती है। हमारी एक मैम हुआ करती थी एमफिल के ज़माने में, तो उनकी अंग्रेज़ी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करती थी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की टीचर थी। तो वो उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। उनका बैकग्राउंड भी किसी गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ का एक्सेंट भी थोड़ा डिफरेंट था। तो वो उन्होंने 3-4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के याद किए हुए थे जो बहुत ही आम लफ्ज़ हैं, जैसे इफ़, बट, देन, सो, एट्सेट्रा। इस तरह के 3-4 लफ्ज़ों, उस 3-4 लफ्ज़ों से ही वो अपनी सारी गुफ्तगू को इंग्लिश टच दे देती थी। कि मसलन इफ़ में आई, देन में चली गई, सो ऐसा हुआ, देन वैसा हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ। यानी अपनी आम गुफ्तगू में इफ़, देन, बट, सो जैसे इतने छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल करके बड़े इंग्लिश एक्सेंट के साथ कोशिश करके, तो यूँ महसूस होता था कि जैसे उनकी आधी से ज़्यादा गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हुई है, जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यही 4-5 अल्फाज इस्तेमाल करती थी। ऐसे ही हमारे अंग्रेज़ी के उस्ताद अक्सर हमें कहा करते थे कि बोल चाल के लिए तो चंद अल्फाज की ज़रूरत है। आप कोई दिन भर में एनलिस्ट कर लें, चंद एक अल्फाज को आप दिन भर में बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हीं से आप अपना माफ़ी और ज़मीर बयान कर लेते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपना माफ़ी और ज़मीर बयान करने के लिए यू नीड टू स्पीक एज सिंपल एज़ यू कैन, यानी इतने आसान सादा अल्फाज में गुफ्तगू कीजिए। चाहे आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तब भी सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इज़, एम, आर वाले छोटे छोटे सेंटेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दिस दैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले मैंने एक दो वीडियोज़ इस हवाले से बनाई हैं स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, जिनमें मैंने कोशिश की है बताने की कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आम घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। वुड का इस्तेमाल करके बड़े डिसेंट क्वेरीज, आसान आसान सवाल दोस्तों से किए जा सकते हैं। आम बोलचाल के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल और डे टू डे वर्ड्स यूज़ करके अपनी बात बयान कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एक स्पोकन लैंग्वेज के हवाले से एक वीडियो देख रहा था, तो एक टीचर बहुत ही मज़े की गुफ्तगू कर रहे थे, तो मेरा दिल किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो कोट करूं। मुझे उनका नाम मेरे जहन से स्लिप हो रहा है। अलबत्ता वो उनका जो असल मुद्दा था वो ये था कि जब हम आम रोज़मर्रा गुफ्तगू करते हैं, घर में जो बातें करते हैं, उसमें बहुत ही सादा लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं,
मसलन शौहर घर में आता है तो वो बीवी से कहता है, उन्होंने पंजाबी में ये एक्सप्लेन किया था कि बीवी से कहता है फ़लाँ चीज़ कित्थे है, बीवी फलां बताती है फल ओथे है। यानी वो कहते हैं कि हमारी गुफ्तगू का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कित्थे है, ओथे है, इसी पे मुश्तमिल होता है। आम रोज़मर्रा गुफ्तगू यानी इतनी आसान होती है कि इत्थे है, कित्थे है, ओथे है, इन्हीं अल्फाज से ही बातचीत होती रहती है सारा दिन में। मियाँ बीवी के दरमियान यही बातचीत होती रहती है। शौहर पूछता रहता है फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है, और बीवी बताती रहती है फ़लाँ चीज़ वहाँ है, फ़लाँ चीज़ वहाँ है, फ़लाँ चीज़ वहाँ। तो वो कहते हैं कि आम घर के अंदर अगर आपने अंग्रेज़ी बोलचाल का माहौल बनाना है तो आपको तो इतनी सादा सादा लफ्ज़ों के साथ भी आप जो है वो घर का माहौल इस तरह का बना सकते हैं। और आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो स्पोकन लैंग्वेज है वो स्पीच फील्ड इन्वायरमेंट के बगैर नहीं आ सकती। जब तक आप एक ऐसे माहौल में नहीं रहते जहाँ पे चारों तरफ में आपको वही ज़ुबान सुनाई ना दे रही हो, उस वक्त तक आप उस लैंग्वेज को उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मास्टर द लैंग्वेज, यू कांट इवन स्पीक दैट लैंग्वेज विच इज़ नॉट मेल्टेड इन योर एटमोसफियर। अगर आपके माहौल में कोई लैंग्वेज घुली मिली हुई नहीं है तो वो ज़ाहिर है उससे आपकी लिसनिंग नहीं होगी, आप लिसन किसी और चीज़ को कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे आप आधे घंटे के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं और बाकी जो 23.5 घंटे हैं दिन के उनमें आप पंजाबी बोल रहे हैं, लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। घर में आप जाते हैं तो वहाँ पे और तरह की लैंग्वेज बोल, हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही मुसीबत है कि हमने कई कई ज़ुबानों को साथ लेकर चलना है। कुछ की हमें मजहबी तौर पर ज़रूरत है, कुछ की हमें माशरती तौर पर ज़रूरत है, कुछ की हमें तालीमी तौर पर ज़रूरत है, कुछ की हमें वैसे मैनर्स अदब आदाब के लिए ज़रूरत है। फिर अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए वापस फिर हम पंजाबी में आ जाते हैं। तो हमें पंजाबी सीखनी पड़ती है, हमें उर्दू सीखनी पड़ती है, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है, हमें अरबी भी सीखनी होती है। तो और एक लैंग्वेज को सीखने के लिए भी चार चार स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। यानी उनकी रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग और लिसनिंग आनी चाहिए। तो छोटे बच्चों के ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है कि उसने गली में जाके पंजाबी भी सीखनी है, घर में माँ बाप ज़बरदस्ती उसको उर्दू भी सिखा रहे हैं, स्कूलों में उसको अंग्रेज़ी भी सिखाई जा रही है, मदरसे में उसको अरबी भी सिखाई जा रही है। चार चार लैंग्वेजेस का बोझ है मासूम बच्चे के जहन के ऊपर। और वो चार चार लैंग्वेजेस नहीं बल्कि 16 स्किल्स बन गई जो बच्चे ने सीखनी है एट द वन एंड सेम टाइम। तो दैट बिकम्स क्वाइट हैक्टिक फॉर द लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी मुसीबत का बायस है। फिर नतीजा क्या होता है, या बच्चे पढ़ाई से भागते हैं या मदरसे से भागते हैं या खुदा न खास्ता घर से भागते हैं। क्योंकि बच्चा हर वक्त प्रेशराइज रहता है कि उसको स्टडीज़ के हवाले से, लैंग्वेजेस के बर्डन के हवाले से उसको हर वक्त अलग अलग तरह के प्रेशर्स जो हैं वो हम देते हैं। हमारा सिस्टम इस किस्म का हमारा डेवलप हो चुका है, हम चाहते हैं कि बस बच्चे के नंबर आएँ। स्कूल वाले कोशिश कर रहे हैं बच्चे के नंबर आएँ, सिलेबस ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है कि बच्चे के नंबर आएँ, वालदेन पूरा जोर लगा रहे हैं कि बच्चे के नंबर आएँ, अकेडमीज़, अदर इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन अकेडमीज़, सारा सब कुछ क्या कर रहे हैं कि जी बच्चे के नंबर आने चाहिए, नंबर आने चाहिए और नंबर आने चाहिए। तो बस इस दौड़ में हम बच्चे को स्पॉइल कर लेते हैं। वो फिर कभी कभार हम देखते हैं ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं कि नंबर तो आ जाते हैं बच्चों के, मसलन इस दफ़ा तो हमने देखा 1100/1100 नंबर भी आ गए बच्चों के। उन बच्चों के अंदर, बेचारों के अंदर कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स, कोई चीज़ें डेवलप नहीं हो सकी, बस वो किताबों को रट के नंबर ले आए। आप देखें ना, पूरे वाला माशाल्लाह सिटी ऑफ एजुकेशन है, सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है। तो सिटी ऑफ एजुकेशन का खिताब पूरे वाला को हासिल है, 1100/1100 नंबर यहाँ हमारे बच्चों के आ रहे हैं। लेकिन कोरोना की वैक्सीन दुनिया के किसी और कोने में बन रही है। यानी क्रिएटिव काम जो है वो हम नहीं करेंगे, हमने करना ही नहीं है, हमने सिर्फ वही काम करना है जिसमें रट्टा लग जाए, नंबर आ जाए, दैट्स इट। इस हवाले से बात मौजू थोड़ा बदलने लग गया। बात मैं स्पोकन इंग्लिश की कर रहा था कि आम अंग्रेज़ी बोलचाल के लिए हमें सादा लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, विच कैन बी यूज क्वाइट ईजीली एंड वेरी फ्रिक्वेंटली in your atmosphere, in your environment, and you have to create a speech filled environment around yourself in order to keep yourself in such an atmosphere where you are listening to the same language, you are listening to the target language which you want to learn, how to speak. If you really want to learn how to speak English, you must create an
atmosphere at your home, at your workplace, wherever you are throughout the day. You have to create an atmosphere where you can speak this language to the people. If you don't have this type of atmosphere, then definitely you will listen to other languages, and whatever you listen, that becomes a permanent part of your speech organs and speech boxes. And definitely the words of local language or mother language must come out of your speech boxes, because you cannot practice it in the speech field environment. So the very first and foremost thing in order to improve your ability to speak English is to create an atmosphere, is to create a group of people with whom you can talk in this language, especially at home, because you spend most of your time at home with your family, and there are different people in your family. Some of them cannot even understand Urdu language. It is not to speak of English, they are unable to speak Urdu language. So then you will have to face so much problems. So you can create such an atmosphere by giving your family members small sentences in order to interact with them, in order to communicate with them. When you give them small sentences and they start using them with you at your home, then definitely an atmosphere will develop at your home or at your workplace that will enhance and that will create wholesome effects on your speaking English language. It is not as difficult as it seems to be. Actually, it is a very simple and very feasible way to enhance your fluency, to enhance your ability to speak English. Otherwise, when you think that only speaking for hour, for 1 hour, for 2 hours at some speaking classes, that will not improve your English skill, because you have to do it all the time. You have to do it, you have to give your all of your time to this skill, to improve this skill. But the problem is there, that we have to speak other languages as well when we are talking to our shopkeeper, when we are talking to a vegetable or fruit vendor, when you are talking to a rickshaw driver, or when you are talking to your maid servant, or you are talking to some other person who is not in a position to understand your language, then definitely you will face problems. And for that purpose, you can create an atmosphere at your home or at your workplace which enhances your capacity to speak English. And when if you want to speak English, then keep on speaking, keep on speaking, keep, वैसे जैसे वो कहते हैं ना फारसी में कि गर तो खाही मी नवीस, गर तो खाही खुश नवीस, मी नवीसो मी नवीस, कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छा लिखने लगो तो तुम लिखते रहो और लिखते ही रहो. Practice makes a man perfect. So if you want to become a good speaker, keep on speaking, keep on speaking, keep on speaking. And when you are speaking, when you are talking, never bother about English grammar, about rules and regulations, about principles, about correction rules, about tenses, about grammatical errors, about expression errors. Whatever comes to your mind, speak it out with fluency. A time will come when every possible correction will automatically be made in your speech. If you keep on speaking, it will definitely end in making you a good speaker in English. And if you carry on feeling, if you keep on feeling hesitation, then definitely you will not reach your goal. You cannot express yourself in English language. It will take it will take a serious effort on your part. It will take a consistent effort on your part to speak English, and at the end you will definitely start speaking English. This marvel will take place only when you keep on doing this, when you keep on practicing, when you keep on speaking, whether the other person understands it or not. Even a teacher was saying in a video clip, he said that I daily practice speaking English language with my child who is only a few months old, and he cannot understand what I'm talking.
He even cannot understand if I talk to him in Punjabi or Urdu or any other language. I talk to my 6 years to my 6 months old baby in English language, and he gives me the response. He gives me feedback by his facial expressions, by his oohing and cooing. He gives response and feedback. So you have to keep on doing the practice. You have to keep on doing the practice all the time. And if you carry on, if you keep on this practice, it will definitely bear fruit one day or the other. But it needs consistent effort. This was the message of today for the people who want to become good English speakers. Allah Hafiz.